Hello guys, we are back again with another live session of A2Z podcast. Those of you joining in from different platforms, earlier we used to do this as a podcast kind of a model where we used to talk about news updates. And today we don't have Krish with us, he's traveling due to some reason. So, today we have a new guest with us who is Ritik. Hello, hi Ritik. Namaskar. Hi, Ritik. Hi. Yeah. Hi. Hi, Shovik. So Hi, we have Sham. Ritik with us along with Shovik, and as you guys know, it's me, Samantak here. So today we'll have a different kind of show, basically, like just not what we used to do earlier. So today we'll have Ritik with us, who is a founder of a project called Film Finance. So we'll basically talk about like his journey into Web3, how the idea came up, and what Film Finance is doing in the Web3 space. Along with, we'll cover all the technical details like where the markets are heading and some of the news at the later half. So today we will start off with Ritik as he's our guest today. And I hope that you guys are joining in from YouTube, LinkedIn, Twitter. So do like and share this stream so that many more people can join in and be part of the stream. So without further ado, let's start with the questions. And in between, sorry, like last time we also forgot, आप लोग जो कमेंट सेक्शन है उस पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो. So basically last time we only got one comment at the end, that was good evening sir. So this time I'll just say that you can ask as many questions to us as well as Ritik, and this will be like almost a 45 minutes to 1 hour stream. So you can ask anytime and we'll take up the questions in between. So let's start off with the session, and for the starting, we'll ask Ritik about like his formal introduction, like where he's from and how he started, and then we'll go deep into his journey into the Web3 space. So hi Ritik. So let's start off with your introduction. Yeah, absolutely. Uh, Hi, everybody. This is Ritik Das. I'm from Kolkata, and I've been in this sector for a long time now. I've also written two books on blockchain and cryptocurrency, The Fundamentals of Cryptocurrency and The Fundamentals of Cryptocurrency 2.0. The journey continues. You can find these books in Google Books and as well as Amazon Kindle. Beside this, I used to mine cryptocurrencies, and that's how I got into this space. I'm a heat Bitcoin hodler. I just never sold Bitcoin. I've only bought till when I started since the inception. I've only bought Bitcoin and I've never sold it. So I'm a heat hodler in that scenario. And apart from the blockchain industry, I have another business of mine into sector, and I also advise people on how they can plan and strategize their business goals and roadmaps, right? And in the last 1 year, I've started working on filmfinance.app. It's a Web3 based crowdfunding and media streaming platform with a watch to earn program. So this is what we are trying to do. We are trying to build something for the entertainment sector in using the blockchain. So hope that So turns Ritik, out well. Since yeah, sure. since from the inception you started buying only Bitcoin, and I hope you have bought other coins also. Now you have Yeah, become you're there. filthy rich, I suppose, or at least after a couple of years you will become that rich that will it will be hard enough to reach within your limit. You guys will always be there around us, right? Because that's where we are heading together. I believe so because there are very less people here working towards blockchain and Web3, particularly in the eastern side. And I hope that we all can come together and make this place a better place for the, like, what to say, like make Kolkata or Bengal that headquarters of the eastern corridors. Yeah, crypto adoption in Kolkata and especially in the eastern part of India is gradually growing, but I mean the pace is bit slow if you compare to the other multi-class cities like Tier 1 cities, Delhi, Bangalore, Pune, Mumbai, etc. So Kolkata is growing but slowly. So now we have to do But something still, so I'll that at least, yeah. just want to say one thing here. Dear hai, durust hai, but let's go forward Exactly. from here. And Yeah. I think Ritik, just one small question. Like, I think whatever you told about the books.
So basically, it's like a part one and part two. So Yeah. it was like DeFi 2.0. And coming up with Web 3, are you planning a third part of the book? Yeah, I am planning, but this won't be a part of that. But this would be about blockchain and the entertainment industry. How these two can like be together and can help each other out. Right? So Like coming, the internet came in, and that before that we don't know didn't know what streaming was. Right? So internet helped us get streaming. So maybe this will help us get tokenized investment or something more. right. So just as we are going into that thing, like how to, film finance and uh, coming of the blockchain industry में कैसे हम लोग films को and entertainment को ला सकते हैं. So how your journey started off in the Web3 space? Like you told like you were in from the food sector, right? You were having another Yeah. startup जो आप food में कर रहे थे. So how your journey from food till Web3, and Yeah. how did you become that heat hodler of Bitcoin? या बेसिकली मैं स्टॉक्स के साथ भी वही करता हूँ. मोस्ट ऑफ माय स्टॉक्स आई हैव बॉट, आई हैव नॉट सोल्ड. आई डोंट नो व्हाई. आई हैव अ थिंग आई बिलीव समवेयर डाउन द लाइन, like 10, 20, 15 years down the line, I'll have a lot of value of stocks over there on upon which I can take a loan and start off my own start one more startup where I don't need to go behind funding. So yeah, coming That's back a to good, this yeah, good point, way like of, how, yep. yeah, becoming independent and not depending on the funds from the VCs. That's actually quite good thinking. That and also you started earlier, so that's a very plus point. I think down the line in your future, that would definitely help you a lot. I hope so. I really hope so. And about how I entered the Web3 market, it was like I really wanted to have a side income, right? A passive income. And whatever you do, passive income is not really passive, right? You have to put in some work. So mining was the only thing it for me was like you plug it in and the money would start coming in. At least when I started it, I thought it was like that. And oh God, what a journey it has been since the buying my first graphics card till today, where almost all my rigs are sold off, and I'm waiting for like the next bear market to buy my ASIC miner. Let's hope that that goes well. Opportunistic. That's actually quite a good thing. Yeah. And People actually life people has taught actually me get this way. scared when the beer market is on the corner. People actually get scared and they're afraid of buying stocks or cryptos in Mhm. any asset classes. But that is the right time to invest since the things are cheaper in the market. Yeah. When fear is around, then you have to jump in and buy. Yeah, first the thing is everyone says this thing, and then when you try to implement it on your first cycle of your journey, you always miss it, right? So I missed it. I lost a lot. So I now understood that okay, ये नहीं करना है. इसी से बच के रहना है. Like in the first cycle, you lose your money, lose something, and then you learn, and that's like a fees जो आप pay कर रहे हो to learn those things, right? Absolutely, absolutely. Yeah, Ritik, I want to ask you how will finance that entire concept came into your mind on the first place. Okay. So actually, after my 11 and 12, I was a commerce student. Okay. So, and I was very good in economics at that point of time, not now. At that point of time, I was good in economics. And later on, what happened was I wanted to learn about filmmaking, and the filmmaking line has always enticed me. Like, I was always, वो मैं होता है ना कि आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं movies and the glamour world, it always has pulled me. Right. And at some point of time, I wanted to be a actor as well. So I went on to a filmmaking school, and in the filmmaking school, what happened was I understood being an actor was very tough for me because I wasn't a good student. I was not good at memorizing things, and actors have to memorize long scripts, right? So that's where I understand. That's where I went into the filmmaking side of it, and from there onwards, I started wanted to be a independent filmmaker. And as you understand, क्या होता है ना, एक दो फिल्म अपने पॉकेट से आप बना सकते हो बट यू कैन गो मोर देन दैट, राइट? सो मेरे साथ भी वही है. आफ्टर मेकिंग टू फिल्म्स आई वाज लाइक
उससे तो पैसा नहीं आ रहा है, तो वाई मैं अगेन यहाँ पे पैसा दूंगा एंड वोंट वर्क अगेन. सो मन में ना, you start questioning yourself, your abilities. So I have seen, not, this is not particularly my story, I've seen a person who is like literally talented like hell, right? And that person just did not have connections and network. He was talented. So our film industry is not merit based. It's like networking based. People, if you know people, तुम्हारा काम बनेगा. If you don't know people, तुम्हारा काम नहीं बनेगा. And then when in 2017, after I started mining and mining, I also, beside that, I also came to know something called DeFi has came into the market, something called decentralized finance. So वहां से मुझे पता चला, I put in a lot of money in all of my DeFi projects and I lost all of them. 100% of my money that I put in has gone away in DeFi. But I understood how it works, right? There's the process, our money comes in, then they do something with the money, and that's, sometimes they lie to us, sometimes they do try to do good things but it fails. But there are many scenarios, right? So people do the scam. The technology itself is not a scam. People use the technology according to their needs and they manipulate other people for their needs, right? So that's where I understood, if blockchain can be used for the things that I didn't get. For example, if someone can, i I don't believe that, how to put this, if someone has uh, about 10 lakh rupees, he at least can pitch his movie to Shah Rukh Khan, and Shah Rukh Khan would come down to a meeting and listen to him. Right. But a person, and then when Shah Rukh Khan signs him, Shah Rukh Khan says yes, then crores and crores of deals will come in from various places. Right. But on that initial push, even if you have a good story, you cannot go and pitch it to them because of your connections. Right. But Yeah, in our world, paisa bolta hai. If you have the money, you can go and pitch it to him. So why absolutely. not with crowdfunding? We can do that. And this thought has already come. I've even tried crowdfunding for my own project. But kya hota hai? We give t-shirts, we give posters and things like this, right? So people are not genuinely interested in funding the projects. But once if you give them a place where they can earn, when they can use this as an alternative investment, like we are ready. एक बंदा सोच लेता है कि uh, I'll from tomorrow I'll start learning about the stock market and I'll go into equity trading, right? And from years on he has not learned anything about. He starts from someday and goes on. But film page 3 हम लोग बचपन से सुनते हैं, फिल्म में क्या हो रहा है, क्या है, a place what we know about, what we are passionate about. So there should be a model where we can have this investment thing going on in the in entertainment industry. So many things came together, and many nights, stupid thoughts, stupid writings came together and formed up Film Finance. Let's see. We are already we have done with our MVP. We are developing it at the moment. We are testing it as well. So fingers Ritik, I, crossed. I was just quite curious about one thing, like from an industry guy and from an economist. Mm. What was the driving force that actually made you to write books, Okay. become an So to author? be honest, What was the motivation? I was actually trying to find out. the motivation was first motivation was I wanted to find out, suppose the mining thing, right? I've been mining for the last many years. Like I've ended it when Ethereum ended, right? On my 20th September, I ended it, right? So before that, after for a couple of years, 2.5 years, 3 years, I have mined properly with proper like rigs, not like one or two graphics card. With proper rigs I've mined, right? But क्या होता था ना, when you go out and talk to someone and you don't have credentials. मेरा credential था क्या, मैं 11 12 कॉमर्स में पढ़ा हूँ, उसके बाद मीडिया साइंस पढ़ा हूँ, एंड देन आई एम इनटू क्लाउड किचन. मैंने एक क्लाउड किचन खोला है. Okay. So and I've also worked in entertainment sector, and I've also startup that worked in entertainment sector and a clothing line. Okay. So nothing is मतलब टेक भी नहीं, मैं आईटी का भी नहीं हूँ, right? So people won't listen to me, and at that point of time I couldn't go out and take a degree. That would have not be a proper use of my time, right? So book was something, क्या होता है कि two people are sitting and you say कि this is your opinion, this is one other person's opinion, and your credentials is he's a writer of two books,
right? Automatically your credentials grows up. So I've put in my effort to write those books. Yeah, it was a lot of effort, and many sweat went into it, and that's why the third book is not coming out so early, because I'm really busy with film finance, and it takes a lot of time to write the book. Yeah, I know you can write it with chat gpt, but that won't And be actually my it's a thoughts. quite creative Right. process. To implement creativity, something onto the paper, it really takes a lot of effort. Yeah, as Yeah. because I've also studied journalism and things like that, so it helped me a lot in writing. Mm, that's for sure. So yeah, we got like a brief overview about like why you started film finance and what's the vision about it. So I think coming to again the point where what do you think about like the overall markets, not just film finance. So we have NFTs, we are coming up with metaverses, we have seen a last run having all these things, people buying selling art and all those projects going down right now. So how do you think like NFTs can fit in the entertainment industry, and just like RWAs are coming in right now, रियल वर्ल्ड एसेट के साथ हम लोग एनएफटीज को जोड़ रहे हैं. सो हाउ डू यू थिंक लाइक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हम लोग एनएफटीज को और यूज कर सकते हैं, एंड व्हाट कैन बी द some of the use cases where people can think of, like you are doing one of the use case where you're giving NFTs as for funding films, right? So what are the other use cases that you have in mind, or maybe होता है ना कि जब once you are researching you come up with a lot of ideas but you can't do all of it, All of them, so maybe you exactly. I have can a give lot of some ideas ideas. like this which I cannot do all, but yeah, there are a lot of things that we can do, not only in not only entertainment. You take that sector as media, entertainment, and events, right? We If you take this sector, we can do a lot of things. First of all, that comes to mind, and everyone knows, of course, about it, that NFT ticketing, right? You can make tickets for to an event, right? And similarly, what we are doing in crowdfunding for films, it can be done uh, f- uh, with an event as well. This I was talking in the NFT day on the event as well. So what we can do is, a film process is a long process. Like film एक दो महीने में नहीं बनती है, right? But we can right now we can sit down and organize and think and design an event for the 25th or the 31st of this year, right? So that event would have some cost. So we can tokenize that. We can take in the crowdfunding money, and whoever is crowdfunding them is entitled to a share of the profit that would be generated from the event. So that event can be a what to say, an Arjit Singh event, right? So that event can be like multiple stars. If it's crowdfunding, the amount of money that can be raised is phenomenal, right? So you can have all of them, like San, Sunu, Sunidhi, Shreya, all of them together in one stage. All right. So there's a lot of things that you can do. Apart from this, one thing, I don't know how it would work, but before this event, when I was just getting ready for this event, something came to my mind, and I don't know if it's feasible or if we can use it like this in the real world. But think of it like advertisement. For example, there is a Akshay Kumar film or a Shah Rukh Khan film or an Amir Khan film, and in that movie, someone is sitting in the like for this background, right? Shah Rukh Khan is sitting in this background and having a scene, right? And suppose there is in this here there is a picture, right, on the wall, and that picture is painted by someone else. So what we do is, we to advertise, we buy spaces in various ways, right? In paper we take, in digital spaces we take, right? So we can also take it as an advertisement, as we can place that picture, and after the film success or after the film gets popular, you can say that this picture was there in the film, so that's why this can go up, right? So this just a thought. You can do a lot of things with I NFT. believe these kind of pictures are basically going to auction, right? Yeah, it goes to auction, right? So Yeah, yeah. the auction is behind closed doors. That's where everyone cannot go into those auctions, Yeah, right? you must have to fulfill certain criteria in order to participate in that auction. Yeah, So, exactly. And as because those are not fractionalized, तो mm, आपको तो मतलब वो बहुत ज्यादा पैसे से खरीदना पड़ेगा ना. बिल्कुल. वो भी है. So these are Right. some of the use cases, and as of now, nothing else comes to mind. But basically, what I think is,
NFT is what? NFT is a smart contract, right? And whatever we do in this industry is basically contracts. Like we sign it on paper, like this is the condition of the contract, and if these conditions are met, this would be done. So I believe, like in 10, 15 years, maybe it won't even take that long. Contracts, all the contracts would be smart contracts. Right. So whatever you can put in a stamp paper and think of can be put in a smart contract and an NFT. So it's just our imagination where we are just lacking and not finding out what else can be done. So Yeah, this is slowly, but yeah, I would say that things are changing, and implementation of AI is there in a mass scale. yeah. And smart contract is nothing but a recurring program or a set of programs that is self-executing. So eventually we'll come to that place or that point when everything will be replaced, or every contract will be replaced by the Maybe smart not our contract. generation, but eventually. Yeah, 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 yeah. We are moving towards that. Yeah. So coming up with like we have discussed some of the ideas that you have. So what do you think is like just your alpha kind of thing, where you think like next bull run में क्या चल सकता है? Like we are just predicting that RWAs are gonna go up. There are a lot of L2s that are coming up, right? So we are just predicting things. It's not like you are giving us कि कल जाके invest मत कर देना, whoever is Ah, listening to exactly. this. This is not any investment advice, but what do you think is like the next narrative from your side? What do you think, like in the entertainment industry अभी बहुत सारे I think there are projects which are into films and entertainment industry doing a lot of different things like short video apps hai, and they are trying to integrate NFTs, metaverse, other things. So what do you think, like in the next bull run from this sector, what is the next hyping thing that you can see is coming up from here? I believe it's watch to earn. Okay. In media, it would be watch to earn. These people, these projects will all start giving back, just like film finance. We are also doing it, and as of now, we are the only one who is doing it. And I believe everyone will follow in this footsteps, and they would. And that's the way you, how to say, uh, keep your audience in Web3, right? You have to give something back to them, and where they can, even if it's not money. For some, for in our projects, we are giving them money, but in other projects, if even if it's not money, you have to give them a place where they can come and talk to each other, and they can mingle and make the community better, right? Like for example, if I talk about film finance, the main thing is, for example, I whenever I talk about film finance, I give this example. For example, Friends. Like we all have seen Friends some point of the time, even if not the full series, we have seen one or two episodes of it, right? So people have friends who fight among, like some say they love Chandler more, some say they love Phoebe more, right? And most of them maybe even were born after the shooting was done, right? So the thing is, uh, we are so much passionate about it. We want, हम लोग बोलते रहते हैं ना always, the main thing, even if we get this मतलब web3 out of this place, right? What we always say, we need good movies. अच्छे movies नहीं बन रहे हैं, ये नहीं हो रहा है. So that's where the community can come in and make it good. इसके लिए web3 की जरूरत नहीं है, but the mentality of web3, the community mentality of web3, that helps a lot. That will even help the traditional people as well, है ना? So that's one of my thought ki ये जो हम बोल रहे हैं कि ticketing is one more thing that's gonna come then in the next bull run. We will see a lot more projects, like in the Web3 events only. We will be maybe having NFT tickets. Right, we already have that. Maybe in the movie ticketing also we will start. Maybe in the event ticket, maybe Book My Show would start something like this. I'm damn sure they're thinking something about this, even if they're not announcing anything. So every big player is thinking about blockchain and AI, right? So many things can come about, but as of now, I think it's a watch to earn, where the projects give back to the people, and the ticketing system. And of course, the Right. RW is always there. The real world. This is the main, the next thing, right? Real world में जो है वो blockchain में डालो. Right. So yeah, these are some of the things I also see like coming up. The ticketing part of it, I think, is a major thing
मतलब जो भी प्लेयर क्रैक करेगा दे विल गेट अ लॉट ऑफ एडवांटेज एडेड टू इट, बिकॉज अभी तक ऐसा कुछ नहीं है. मेनी आर ट्राइंग इट. देयर आर मेनी स्टार्टअप्स हु आर ट्राइंग टू टोकनाइज टिकट्स, बट इट्स वेरी हार्ड टू ट्रैक एंड गिव अ फुल साइकिल जैसे होता है कि इनिशियल डेज से एंड तक. सो शाफिक, डू यू हैव एनीथिंग फॉर ऋतिक? No, I think he has already explained so many things, and he shared his experience throughout the years, the challenges that he faced, and also the planning he has for us, for viewers, and for movie lovers. That's really commendable. Yeah. So Thank you. at the end, like I just like to ask one thing. That's like a more ending question. So we have just got about like what are the things he has done, and how he progressed into Web3 and all the stuffs that he thinks and visions about Web3. So I hope like you, once you started off, there were many challenges in mining as well as in film finance, as well as in writing the books. So could you highlight just one, two challenges? Because sometimes it's like more overwhelming. We just, focus more on the positive part. Like, okay, I've been stacking Bitcoins from the initial days, but maybe in between you have, that self doubt, like maybe is it correct or not? Maybe I'm putting in a lot of money into Bitcoins, but it's going down. So anxiety, fear, but so there may be a lot of things, a lot of challenges you have faced. So can you just highlight some of it so that audience knows that it's not always the flowers, there are thorns as well, which comes in Absolutely. the journey. Yep. Yeah, yeah, absolutely, absolutely. The main thing that I faced, and I'm damn sure 90% of the people would face this, because 90% of the people won't come from a tech background. And to understand blockchain, you have to understand those tech things. And some of the, whenever I talk to you, understand my vocabulary of tech is so less, right? So when you come from this place, the most important thing I want to say is that basically you learn from YouTube, right? Your initial learning starts from YouTube, and finding a video that really appeals and makes you understand as a non-tech guy is really hard to find. Everyone talks about Web3. First of all, when this Web3 started, most of my friends, they don't even know there is something called Web 1 or Web 2. Hmm. उनके लिए तो सिर्फ इंटरनेट ही है ना, right? Right. So on the first day when you start seeing Web 3, what you will do, you will go and see Web 1 versus Web 2 versus Web 3, and then the chart Right. will come out, and then you'll say bhagwan मुझे छोड़ दो. Right, that's the problem for tech non-tech guys. So that is a real challenge. Like people like you, especially people like you, Shamantak, and people like Shovik, who are traders, who are not developers by nature, right? These people can explain this sort of things to us much more better, right? Decentralization, the word itself, मतलब सेंट्रलाइजेशन क्या होता है वही किसी को पता नहीं है, डिसेंट्रलाइज घुसाने के चक्कर में हम लोग आ रहे हैं, राइट? सो दिस थिंग है ना, बहुत इफेक्ट कर जाता है, लोग डर के मारे ना दे गो बैक, right? We need to make this tech thing much more invisible. I always say this, like I'm for you Shamantak, it's like Ritik तो ये repeat ही करता है हर जगह, यही repeat कर रहा है. But I always say these things because this needs to be heard by many, all the people, right? Because ultimately, as I always say, you don't, half of the, even I don't know how a modem works, but I use the internet on my daily basis, and I Right. get my earning from internet as well, right? So I don't know how my AC works or what type of wirings are there inside my building. I click on the, I click it just on my remote, and the AC turns on and my room gets cooled. I need to know ये बटन दबाने से मेरा रूम ठंडा होगा, राइट? उसमें वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर कंडक्शन कुछ भी नहीं है, राइट? सो हम लोग को वो जगह पे लाना है. वी हैव टू ब्रिंग ब्लॉकचेन education in that place. That's why when we talk about what to say, film finance, we try not to talk about Web3 decentralization. We try to talk about the try to say words and use those words जो मतलब traditional people को पता हो. That's why we say crowdfunding, राइट? टोकनाइजेशन बोलेंगे तो पीपल वोंट, मतलब वो दूर भागेंगे. क्राउड फंडिंग बोलेंगे, ओके क्राउड फंडिंग से पैसा मिलेगा, चटी शर्ट के जगह पैसा भी मिलेगा. दैट्स वेयर देयर माइंड कम्स इन कि ठीक है, अब माइंड एक्टिव करने देखते हैं क्या है. उसके बाद वो ब्लॉकचेन सीख भी लेंगे, पर Right. वो दिमाग में पहले हिट करना होता है ना. So basically that's what I also feel बहुत बार कि
being not myself from a non-tech background, initially I also had these questions ki, should I learn tech, solidity सीख लेता हूँ because higher packages है, everybody talks in terms of, solidity आता है, Java आता है, and I don't know anything about it, right? So initially वो थोड़ा लगा, but after all these events, all these shows and everything, it makes me feel as the same thing कि यार सबको जरूरत नहीं है जानने का. There are developers who are developing it, but we need other people as well in the Web3 and crypto space where there are different other kind of things that we can do and support and may help to the people to understand it. ऐसा नहीं कि डेवलपर आके एक एक कोड सिखाएगा सॉलिडिटी में कि ये रन करने से मिंट हो रहा है, ये रन करने से यू आर एबल टू सेल. आपको बस फ्रंट एंड में अच्छा दिखना है कि लाइक ओके आई एम क्लिकिंग दिस बटन, बैक एंड में क्या चल रहा है इट्स नन ऑफ आवर कंसर्न, जस्ट इट नीड्स टू बी ऑडिटेड एंड सेफ, दैट्स इट. So yeah, that's like a major challenge. I think, Ritik, I think you're on mute. If you're saying something, Yeah, I was saying exactly. It needs to be audited and it needs to be safe. That's the main thing. right? So yeah, with that, I think that's a major challenge. And with that, I एक्चुअली think, मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूँगा. Hmm. Since I used to be a developer back in 2010, and Oh, sorry, काफी I didn't know. साल तक That's why I thought you were a trader and you're a. I'm really sorry about this. नो नो इट्स एब्सोल्युटली फाइन. बट काफी साल तक मैंने डेवलपमेंट किया. तो बात वही है कि सामंतक जो चीज कह रहे हैं या फिर ऋतिक जो चीज कह रहे हैं, तो यहाँ पे हर कोई अगर डेवलपर बन जाएगा ना, तो फिर आगे उसको मतलब मास होता है ना, एक कॉमन पीपल, उनको समझाने के लिए उन लोगों के भाषा में उन लोगों को समझाना होगा. वो लोग कोडिंग नहीं समझेंगे, वो लोग उसका यूटिलिटी यूज केस ये सब समझेंगे, उसका बेनिफिट क्या है ये सब समझेंगे, और उसको आगे लेके कैसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ये सब बस जानना होता है. तो डेफिनेटली मतलब उतना ज़्यादा डीप में जाके एकदम कोडिंग वोडिंग सीख के पैकेज इतना है वो सब कोई ज़रूरत नहीं है. मतलब एकदम नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई मतलब छोड़ ही दे, डेवलपमेंट ना करे, तो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा. बट हाँ, जो लोगों को मतलब नॉन टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जो लोग, तो उन लोगों के लिए ये सब मैटर नहीं करता है कि कोडिंग आता है कि नहीं आता है. यूज केसेस, यूटिलिटीज, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, दैट्स इट. इससे ही चल जाएगा काम. और हाँ, वो उन लोगों को थोड़ा बहुत अपडेटेड भी रहना होगा कि नया कौन सा टेक्नोलॉजी आ रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन और किस किस जोन में या फिर किस किस एरिया में किस फील्ड में हो रहा है. ये सब चीज़ करने से वो काफ़ी हद तक मतलब इस इंडस्ट्री में शाइन कर पाएंगे. right. So I think with this we have come with the first part जहाँ पे हम लोग ऋतिक के जर्नी के बारे में बात किए, how we started film finance and all the things. And now I think we can move to Shobik who can tell us like कहाँ जा रहा है market, कि आपको क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, how नहीं नहीं, how खरीदना बेचना तो अभी सेबी का गाइडलाइंस जो आया है ना, इन्फ्लुएंसर्स लोग या फिर यूट्यूबर्स, वो डायरेक्टली उस तरह से प्राइस पॉइंट पे जाके नहीं बोल again, सकते कि आप इसमें खरीदो, yes. इसमें बेचो. No, I'm just again saying we are not giving investment advice. Just like we are guiding people, Yeah, कि it's for what you educational should. purpose only. Yes, It's for educational purpose only, and no suggestion or recommendation to buy sell. ठीक है. right. Um, So okay, Shavik, let me share my screen. Yeah. yep. So thanks a lot, Ritik. Tell Shavik share the screen. Thanks a lot for giving your insights, giving your suggestions about how you see the markets, how you see the trends coming in the film sector, and hoping to see film finance growing up, and a lot of films like Jawan, Shah Rukh Khan films and Salman Khan films also coming in and getting tokenized on the platform. I really hope so. Yeah. Just a moment. So sure. So till now we have not got any questions. No good evening, sir, for today as well. But we'll keep on with the session going. So Shavik, let me know whenever you are ready with Yeah. the market. But I must tell you, Just Shamantak, a moment. but many Yeah. people see these videos afterwards, even if they don't Right. come live. Many of them, because I most of the time I'm not available this part of time. I see your videos at 3 in the morning, right? So I'm sure many of them sees this video after it being live. Yeah. We have a good viewership
for like videos fund, but for this kind of show it was only because to have the questions also. Like I can any day come in and tell about, okay, this is a news, this is update, this is somebody. We can record it and put it on YouTube. But if somebody, suppose if anybody wants to interact directly with you, like understand, they Yeah. have any questions. So that's why we opened up this kind of a podcast kind of thing, that they can join the live session and they can get the answers as well as they can watch it later. So it's open for everybody. Samantha, please do let me know if the screen is Yeah, visible. yeah. ओके, तो हर वीक की तरह हम लोग इस वीक में भी BTC USDT का जो प्राइस चार्ट है उस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। यहाँ पे लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्राइस पॉइंट तब यहाँ पे इस जोन के आसपास था, तो हम लोगों का ये मानना था कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में जो है वो बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा जो है सेलर्स वगैरह आया है। ये जो लंबा वीक बन रहा है, मतलब सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये जो कैंडल था ये बुलिश कैंडल था, बट नेक्स्ट वाला बुलिश कैंडल का जो है वो उसका कंटिन्यूएशन नहीं हुआ। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे सेलर्स लोग जो है वो काफ़ी हावी होके ये बुलिश कैंडल को आप मान सकते हैं कि 50% तक इसको आके यहाँ पे छोड़े हैं उस दिन के लिए। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत बाउंस बैक करने की कोशिश किया, वही है कि उस रेजिस्टेंस लेवल से नीचे की तरफ वो मूव कर रहा है। और कंसेक्यूटिवली आप लोग अगर देखोगे तो 1 2 3 4 कैंडल्स, रेड कैंडल्स यहाँ पे बना है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग का एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम में ये व्यू है कि 25,000 का जो जोन है वो एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है, और 32,000 ही आप लोग मान के चलो, वो जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो ये जो बीच का जो रीजन है लगभग आपका 7,000 पॉइंट का, तो उसमें जो है उसमें आप लोग ग्रिड ट्रेडिंग कर सकते हो, नंबर वन। नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन आप लोगों का ये, जब ये सपोर्ट जोन के पास आए तब आप लोग वहाँ पे एक्यूमुलेशन कर सकते हो, और जो रेजिस्टेंस जोन है वहाँ पे आप लोग उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, ठीक है। और उसके बीच में ट्रेडर लोगों के लिए तो ये है, और इन्वेस्टर लोगों के लिए क्या है, ये बेसिकली एक एक्यूमुलेशन जोन ही चल रहा है और काफ़ी लंबे टाइम फ्रेम से चल रहा है, जैसे कि मार्च महीने से, ठीक है। उससे पहले आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, मार्केट का जो टेक्सचर है वो कैसा है, ठीक है। बियर ट्रेंड जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ था, डाउन ट्रेंड जो है हम लोगों ने देखा कि ये ऐसे फिर बाउंस करने की कोशिश किया, फिर से नीचे की तरफ मूव दिया। यहाँ से क्या सिनेरियो आ रहा है, यहाँ से जो ये वाला जोन है जून 22 से लेके मार्च 23, इस जोन में एक्यूमुलेशन हुआ। नेक्स्ट क्या है, ये इसको हम लोग अगर एक बैंड की तरह मानते हैं तो लोअर रेंज है 15,000 16,000 और अपर रेंज है 25,000। तो ये 10,000 पॉइंट के बीच में एक्यूमुलेशन हुआ, वो काफी लंबा टाइम तक हुआ। उसके बाद फिर से वही सिनारियो जो है ना वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, आप लोग देखो। तो ये जो बेस बन के आ रहा है ना, आप लोग 15,000 नीचे की तरफ देख लो और वही ऊपर की तरफ 32,000, ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बेस बन के आ रहा है, क्योंकि ये लगभग आपका मान सकते हो कि 1.5 2 साल से चल रहा है। ये एक साल से ऊपर से चल रहा है, 1.5 2 साल नहीं, 1 साल से कुछ ज्यादा ही चल रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसे 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 इस तरह से मूव होते रहेगा, और कितना लंबा टाइम फ्रेम तक होगा, जब तक नेक्स्ट ईयर मिड या फिर एंड तक बुल रन जब तक स्टार्ट नहीं होता है तब तक ऐसा ही चलते रहेगा। तो रिटेलर का जो पेशेंस है वो तो काफी हद तक यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो उसका मतलब आप लोग कुछ कर नहीं सकते हो। तो यही है कि थोड़ा सा पेशेंस रख के आप लोग अगर ट्रेडिंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दोगे तो फिर आप लोगों का फायदा लंबे टाइम फ्रेम में ये ज्यादा होने वाला है। ये बीटीसी का हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, थोड़ा सा इथेरियम का देख लेते हैं। इथेरियम में भी वही चीज है, एक्यूमुलेशन ही चल रहा है यहाँ पे। तो मैं एक बार शॉर्ट टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ इथेरियम में हुआ क्या है। यहाँ पे भी देखिए कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स वगैरह बन रहा है। और एक चीज आप लोग नोटिस करके रखो, यहाँ पे ये जो 1500 का लेवल है ना, ये एक सपोर्ट लेवल है। ये अगर टूटता है तो फिर ये नीचे की तरफ और मतलब जाएगा, ठीक है। तो फिर जिन लोगों का मतलब कोई स्टॉप लॉस वगैरह कुछ सेट किया हुआ नहीं है, तो वो लोग मेरे हिसाब से 1500 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख देना चाहिए। नहीं तो फिर वो ज़्यादा नीचे हो जाएगा तो यहाँ पे 1200 के आसपास आने का चांसेस है। तो काफ़ी एक 300 पॉइंट का जो मेजर गैप है वो नीचे की तरफ दे सकता है।
तो दिक्कत वाली चीज़ है। अगर किसी ने स्टॉप लॉस नहीं सेट किया हो, और जो लोग अभी पोजीशन बनाए हैं यहाँ पे शॉर्ट साइड में, तो उन लोगों के लिए ठीक है। उन लोग 50-50 पॉइंट पे अपना पोजीशन जो है उसको ट्रेल करते रहो। हाँ, बीच में 1-2 बार ऐसा भी मार्केट रिएक्ट करेगा, जैसे कि आप लोग इस कैंडल को अगर फॉलो करते हो, जो लंबा लंबा वीक बना है 1635, और नीचे की तरफ है आपका 1549, तो आप लोग 90 पॉइंट का मान सकते हो इसको। तो 90 पॉइंट का अगर एक कैंडल, जिसका आप लोग एक चीज देखो, इसका बॉडी कितना छोटा है और विक कितना बड़ा है, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है बेसिकली, इस यहाँ पे ना सेलर्स का बहुत प्रेशर है। बुल्स लोग कैंडल को ऊपर ले जाने का कोशिश किए, उसके बाद यहाँ तक ले जाने के बाद वो नाकाम हो गए। बियर्स आके यहाँ पे हावी हो गए और सीधा खींच के पूरा कैंडल को नीचे मतलब लाए। उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं कि मतलब स्मॉल बॉडी रहता है, तो फिर हम लोग इसको डोजी की तरह भी मान सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक डोजी डोजी बना है, जहाँ पे सेलर्स का काफ़ी प्रेशर है। ठीक है, तो इस तरह का सिचुएशन में कभी भी आपको मार्केट के अगेंस्ट में जाके पोजीशन लेना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉस अगर होगा ना तो बहुत बड़ा लॉस होगा इसमें। ठीक है, तो दो ही चीज़ है। अगर आप लोग लॉस में हो तो फिर एक स्टॉप लॉस सेट कर लो और निकल जाओ। अगर आप प्रॉफिट में हो तो फिर ट्रेल करते रहो उसको। और सेफ साइड में जो लोग थोड़ा सा प्ले करना चाहते हैं, तो फिर अभी तो सिर्फ वेट ही करो। अभी यहाँ पे कुछ पोजीशन मत लो, क्योंकि जो इसके प्रीवियस वाला कैंडल है वो डोजी कैंडल बना हुआ है। ठीक है, तो डोजी के साथ आप लोग छेड़खानी मत करो, काफ़ी डेंजरस कैंडल होता है वो। ये हो गया इथेरियम का, तो वही है। दैट्स इट फॉर दिस वीक। ओवर टू यू Cool. शैम। सो श्राविक, लाइक हम लोग अक्टूबर को, मैं जैसे फर्स्ट बार बोला भी था एंड ऑफ सितंबर में, हम लोग अक्टूबर बोलते हैं कि थोड़ा मार्केट अप जाएगा, बट अभी लास्ट टाइम तक हम लोग लास्ट। लास्ट टाइम भी आपने यही सवाल पूछा था, तो मैंने बोला था ना कि लिक्विडिटी यहाँ पे कम है, यहाँ पे मैनिपुलेशन का बहुत ज्यादा चांस रहेगा, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन है। यहाँ पे नहीं रहता है। हम लोग वही ना हम लोग खरीदारी करते हैं, हम लोग थोड़ी ना इन्वेस्ट करते हैं पूजा के टाइम में, दिवाली के टाइम में नहीं करते। और बाहर भी आप लोग देखोगे कि दिसंबर का जो टाइम है, उस टाइम में भी ऐसा ही सीन होने वाला है। आप लोग नहीं देखोगे दिसंबर टाइम में एकदम मार्केट अचानक से भाग के 40-50 हजार 60 हजार चला गया, नहीं जाएगा, वो नहीं जाने वाला है उस टाइम पे। पैसा मतलब जो होता है ना सिस्टम में पैसा आता है, वो नहीं आता है उस टाइम पे। ठीक है, तो अक्टूबर का सीजन तो यही है फिलहाल। आप लोग संभाल के करो जो भी करना है, क्योंकि ये त्योहार का टाइम है। तो आप लोगों को जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो बर्बाद ना हो जाए उसको आप ध्यान में रखो। त्योहार का टाइम में आप लोग सेलिब्रेट करो, ना कि यहाँ पे खून बहाओ मार्केट में। सो बेसिकली अक्टूबर वाला जो नैरेटिव है वो अभी नहीं है। सो अभी डाउन टूवर ही चलेगा। अप हम्म। वाला सीन अभी लगता है नेक्स्ट ईयर तक हम लोग को भूल जाना चाहिए। डिसाइड साइडवेज मार्केट वो तो अलग है। ये तो है, ये तो सीन है। तो चलिए, तो हम लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग का बात कर चुके हैं कि ट्रेडिंग में हम लोग आप अगर ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए अभी अक्टूबर आने में बहुत देर है। हो सकता है नवंबर दिसंबर के बाद जनवरी में कुछ आप देख पाओ बढ़िया चीज़। सो उसके साथ हम लोग चलते हैं अभी न्यूज़ पे। सो आज का हम लोग न्यूज़ को जल्दी जल्दी थोड़ा कवर करेंगे, जो भी मेन मेन न्यूज़ है। और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो शौवी, एक बार आप न्यूज़ हाँ, सेक्शन ऑन कर सकते दिख रहा है स्क्रीन? हैं। नहीं। जस्ट अ मोमेंट। यप। सो इस वीक के न्यूज़ में मतलब बहुत अच्छा तो न्यूज़ है नहीं कुछ, क्योंकि अक्टूबर ऐसा है नहीं तो मेजरली हैक्स, प्रॉब्लम्स, फंड्स गायब होना, ये सब है। बट मेजरली डेवलपमेंट्स होते रहती है बियर रन में। तो विल टॉक अबाउट सम ऑफ द गुड डेवलपमेंट्स एज वेल जो हो रही है अभी। सो चलिए हम लोग फर्स्ट इससे शुरू करते हैं। तो जो न्यूज़ है कि गैलेक्सी, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके आप टास्क पूरे करते हैं एंड उसके बदले आपको एनएफटीज मिलते हैं। जैसे हम ऋतिक भी बात कर रहे थे कि एनएफटीज का यूटिलिटीज क्या हो सकता है। सो यहाँ पे बहुत सारे आप टास्क वगैरह करते हो, बहुत सारे चेन्स प्रोटोकॉल्स यहाँ पे अपना टास्क देते हैं। सो देयर वेबसाइट वाज बेसिकली हैक्ड एंड जो कंप्रोमाइज हो गया था, तो उसके कारण जिसका भी कनेक्टेड था बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं हुआ है फंड्स, बिकॉज ये मोस्टली ऐसे वॉलेट्स थे जो मतलब डायरेक्टली उनका फंड्स ऑथराइजेशन नहीं था ओपन। बट इनका कॉम्प्रोमाइज हो जाने के बाद, क्योंकि गैलेक्सी बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स और चेन्स यूज़ करते हैं, सो
कुछ लोगों का शायद थोड़ा पैसा गया होगा, बट दिस इज नॉट अ मेजर हैक। और अगर अभी आप भी गैलेक्सी से कनेक्ट करके रखे हो, सो इट्स अ डिस्क्लेमर फॉर यू कि आप इसको हटा सकते हो। एंड इट्स लाइक अ मेजर सेफ्टी चेक कि अगर आप कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हो एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे एक्सचेंजेस हो गया, डेक्स हो गया, उसमें आप हो सकता है डेली या वीक में एक दो बार ट्रेड करते होगे, सो अगर कॉम्प्रोमाइज होता है तो यू विल नो इट। बट ऐसे प्लेटफॉर्म शायद आप तभी यूज करते हो जब आपको कोई क्वेस्ट करना है या एनएफटीज कोई एक ऐसे लॉयल्टी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, तो इसमें अगर आप अपना वॉलेट कनेक्ट करके रखते हो तो उसको आप रिवोक कर लो एक्सेस, ताकि आपका फंड्स और आपका वॉलेट सेफ रहे। बट मेजरली इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ हैक नहीं हुआ है। सो इसके साथ हम लोग आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे अपना, जो कि है स्टार एरेना के ऊपर। तो हम लोग लास्ट वीक इसके बारे में बात भी किए थे शौविक, कि एवैक्स जो चेन था वो क्लॉग हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ स्टार एरेना, इतने सारे यूजर्स आ गए थे, राइट? क्रिश भी बताए थे इसके बारे में। सो आफ्टर लास्ट लाइक जस्ट 1 वीक आफ्टर, इसलिए बियर मार्केट में हम लोग जो बात कर रहे थे, देर इज नॉट मेजर अच्छे न्यूज नहीं होते। लास्ट वीक स्टार एरेना लेके अच्छा न्यूज आया था कि स्टार एरेना की वजह से अवैक्स रुक गया था या क्लॉग हो गया था, बट नाउ एंड उसका एक्टिविटी बहुत बढ़ गया था, यूजर एक्टिविटी इन दैट केस। और अभी क्या हुआ है, स्टार एरेना का न्यूज आया कि इट वाज हैक्ड इन दिस वीक एंड अराउंड 3 million वर्थ ऑफ अवैक्स वाज स्टोलन फ्रॉम इट। एंड जो टीम है उस इनका बहुत सारे ट्वीट है, आप इनके ट्विटर हैंडल पे जाके देख सकते हो। एंड टीम ने इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च की एंड एट लास्ट अभी क्या हुआ है, शौविक यू कैन गो टू द नेक्स्ट ट्वीट, जिसमें ये लोग बताए हैं कि जो पूरा फंड था 3 million का, उसमें से 90% ऑफ द फंड हैकर ने रिटर्न कर दिया। अराउंड 10% दे हैव गिवन एज बग बाउंटी टू द हैकर जो भी इनको हैक किए थे। सो गाइज हुएवर हैव बीन इन्वेस्टिंग इनटू स्टार एरेना, तो ये एक अच्छा न्यूज़ भी है, बुरा न्यूज़ भी है कि हैक होने के बाद थोड़े पैसे मिल भी गए 90%, मेजरली ऑल द मनी इज बैक एंड द सिक्योरिटी इज नॉट फुल्ली कॉम्प्रोमाइज, जीरो नहीं हो गया। बट अगेन टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस कि लाइक ऐसे जो भी नए प्रोटोकॉल्स है उनके साथ थोड़ा आप सोच समझ के उसमें कीजिए। बट बहुत बार भी ऐसे भी होता है कि ऑडिटेड प्रोटोकॉल्स भी हैक हुए हैं। सो it's all about the risk in crypto that you take and it's about the risk that you make money. So if you are वही है, रिस्क से इश्क है तो आप कर सकते हो, वरना थोड़ा सा देख के फिर आप इन्वेस्ट या ट्रेड करिए ऐसे न्यू प्रोटोकॉल्स पे। एक्चुअली हाँ सैम, शोभिक। यहाँ पे यूजर्स को करना क्या चाहिए कि अगर पर्टिकुलर कोई डेडिकेटेड एप्लीकेशन के लिए या फिर कोई एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई वॉलेट यूज कर रहे हैं ना, तो फिर मदर वॉलेट जो है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि कोई एक सिंगल वॉलेट जहाँ पे बहुत सारा क्रिप्टो डिप्लॉयड है या फिर क्रिप्टो स्टोर्ड है, उसको कनेक्ट ना करके सेपरेट से एक अलग वॉलेट ही बना लिया जाए, पर्टिकुलरली सिर्फ उस पर्पस के लिए, जैसे हम लोग राइट। इस पे भी करते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं स्पेशल पर्पस वॉलेट। तो उसको कनेक्ट करो यहाँ पे, अगर हैक भी हो जाता है तो सिर्फ वही डैमेज होगा जो इसके साथ कनेक्टेड है। जिंदगी का राइट। पूरा कमाई जो है वो वहाँ पे नहीं जाने वाला है। तो ये राइट। सो इसी के साथ हम लोग आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि है हुओबी का। सो देयर वाज अनदर हैकर फॉर हुओबी, जो ऑलरेडी 8 million रिटर्न कर चुके हैं, $8 million जो उन्होंने हैक किया था। एंड उसमें से दे हैव ऑलरेडी गॉट अराउंड 250 ईथ, विच इज़ अराउंड आई थिंक 40,000 समथिंग। सो ही हैज़ गॉट दैट अमाउंट जस्ट एज अ बाउंटी बिकॉज उन्होंने वापस कर दिया। सो दिस वीक अगर हम लोग देखेंगे न्यूज़ को, इट्स मोर लाइक कि जो बुरे न्यूज़ हुए भी थे, हैक हुए हैं, प्रॉब्लम्स आए थे, बट द हैकर्स आर गुड इनफ कि चलो बियर मार्केट है तो कुछ पैसा दे देते, बर्बाद हो जाएंगे नहीं तो प्रोटोकॉल्स। सो दे हैव गिवन बैक द मनी and almost 90% of the money is back with the protocols, and they have got some amount as big bug bounty, so that's a very good amount and very good news because पूरा हैक होने से अच्छा है कि आप कुछ बग बाउंटी देके उसमें से you get most of the funds out rather than losing everything and shutting down the protocol and user का trust होना। सो विद दिस हम लोग आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि बाइनेंस का है। कि अगर आप बाइनेंस के यूज़र हो, और ये मेजरली हांगकांग के एरिया में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हांगकांग प्रोविंस पे, कि लोगों को ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं या लोग रीच आउट कर रहे हैं एंड करके लोगों का अकाउंट हैक करने का कोशिश किया जा रहा है।
एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे 450K डॉलर्स का कॉम्प्रोमाइज हुआ है. सो समबडी इफ कोई भी आपको मैसेज कर रहा है या कोई भी मैसेज करके आपका अकाउंट का एक्सेस मांग रहा है, नेवर गिव अप योर प्राइवेट कीज और अकाउंट एक्सेस किसी को भी. एंड ऐसे मैसेजेस से भी आप दूर रहिए ताकि आपको अ, आपका फंड सेफ रहे और आप स्कैमर्स के इस चंगुल में ना फंसे, क्योंकि आपको लगेगा ये कि बाइनेंस की तरफ से ये आ रहा है एंड लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, सीजी कांटेक्ट कर रहे हैं आपको कि आपका मैं फंड बढ़ा दूंगा. बट नेवर बिलीव एनीबडी इन द क्रिप्टो स्पेस I अदर देन wish. योरसेल्फ. Yeah, because I have there was a time, I'll just remember a funny incident. I was saying this once I was on Twitter and I saw that Nishchal Shetty follows you. I was like, okay, cool enough. And when I go to the spelling, it was NISCHALL. Okay. And it's like a very good profile. He just retweets everything that Nishchal Shetty posts. So at first glance you'll be like, okay, cool, yeah, I got famous, so Nishchal Shetty is following me. Like, very nice, man. But then you'll like see like, okay, this is not the Nishchal that we know. So same can be happening with you for CZ or anybody else, all the founders of the exchanges. So coming to the next news, it's again just like the Galaxy thing. So OddSwap, which is like a swapping platform, has lost the control of their OddSwap domain. So they are still trying to regain access to the domain. So anybody who are using WhatsApp for swapping, please don't use it because it's not under their control, and the domain DNS may be redirected to some other website, which may be a copy of it. So your funds may be stolen. So आप WhatsApp से अभी कुछ दिन के लिए दूर रहिए ताकि जब तक आप उनका वेबसाइट लाइव नहीं हो जाता है. So I सावधान think रहे. सावधान रहे, सतर्क रहे. So coming to the second last news, it's about the depegging of a stable coin. So this was a real estate backed stable coin, USDR, and it has been depegged and it's almost 50% depegged from its original value, and it was drained of its liquid assets. And I think if Krish was here, he would be a right person to talk about this because he's our stable coin expert who can talk about how these things happen and why and where from this thing happen and how can you can keep safe out of this. But again, if you're using this kind of stable coins, try to uh, trade with all the big fours. Now BSD is also stopping its operation, so big threes. And coming to the last news, it's a news by the co-founder of Polygon, that is Sandeep Nawal. So he has proposed the ApeCoin DAO, the ApeCoin project, that they should have and develop their own ZK protocol, ZK layer 2, basically, in which Polygon will also help them and with their Polygon chain development kit, and which will help to help the ApeCoin ecosystem to grow and flourish in the coming days. So this is a very major good news after all the bad news that we have seen. So Polygon is coming up and supporting the ApeCoin ecosystem. And maybe if they are taking the proposal and shaking hands, we can see a lot more development in the ApeCoin ecosystem, and the price may be going up. So again, this is not a buying recommendation. This is like only we are just analyzing the news and sharing our views only for education purpose. So with this, I think we have covered all the major news for this week, and we can call it off a day with my side. So Ritik and Shavik, if you have anything to share more about all the bad news, इतने सारे खराबी news आए. So if you want to share your thoughts, just like Shavik shared that you should have a burner wallet for taking part on this. Ritik, if you have something for us. आई एम एन इन्वेस्टर. जब बुरा चीज सुनता हूँ ना, मैं कान वान बंद करके बाद में देखूंगा बोल के सब बंद कर लेता हूँ. So Ritik is like a person जो बियर रन आने पे वॉलेट भूल जाता है, बोलता है वॉलेट छूना नहीं है, मैं सारे एक्सचेंजेस से फंड्स सिर्फ हटा दो. डालना है. सिर्फ डालना है. जब मुझे बुरा चीज कोई सुनाई देता है तो फिर मैं देखता हूँ कि वो कितना दिन तक बुरा रहता है, क्योंकि ऐसा That's a तो good होगा ही point. नहीं कि वो हमेशा ही बुरा रहे. खराब वक्त सबका आता है, कोई ना, मतलब आप कोई भी कंपनी का प्रोफाइल उठा के देख लो. मैं इक्विटी मार्केट का बात कर रहा हूँ.
किसी ना किसी कंपनी मतलब हर कोई कंपनी का एक ना एक टाइम आया है जो बहुत बुरा दौर या फिर बुरा फेज गया है, और वही टाइम है वो उसका जो शेयर वैल्यू है या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू है वो ज़्यादा है, लेकिन प्राइस पॉइंट पे वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब स्पॉट प्राइस काफ़ी नीचे चल रहा है, तो फिर सस्ते में तो चीज़ तो तभी मिलेगा ना तब जाके वहाँ पे तो खरीदारी करना चाहिए, वहाँ पे ही काम Right. करना चाहिए। दिस नहीं तो मतलब क्या है आप कि जैसे बोल रहे हो भेड़ चाल में जाके तो कोई पैसा नहीं बनाता है मार्केट में, ये तो मतलब एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो आप जैसे स्टडी बोल करना रहे हो ना होगा। वैसे ही मैं IRFC में ऐसे ही पैसा बनाया था। आई गिव इन मनी वे बिफोर, मतलब उन लोगों को वंदे भारत का था लेकिन था। वही है कि मतलब देखना होगा कि बैड न्यूज़ जो है उसका इम्पैक्ट कहाँ-कहाँ तक है, मतलब थोड़ा-सा R&D करना होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी एक मतलब कोई भी कुछ बुरा भी चीज हुआ और वहां स्टॉक चले अगर गए। बुरा हो जाए, मान लो कि वो डिलिस्ट ही होने वाला है आगे जाके एक सीरीज हो गया उसमें घुस गए, तो फिर तो हो गया इस आपका पैसे का बर्बाद हो इस गया। ये वाला एग्जांपल से मेरे को लूना का याद आ मैं गया। एक्चुअली स्टॉक का नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन वो लोग काफ़ी बार कोशिश कर चुके हैं मार्केट में कि वो लोग डिलिस्ट हो जाए। जो लोग मार्केट से जुड़े हुए हैं, वो लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि मैं कौन-सा स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उस टाइप का स्टॉक से आपको दूरी बना के रखना है। दूर उस टाइप का ऐसे क्रिप्टो में भी होता है कि काफ़ी सारा प्रोजेक्ट्स जो है वो सिर्फ़ फाउंडर्स अपने बेनिफिट के लिए, जैसे कि ऋतिक ने पहले कहा कि टेक्नोलॉजी के यूज़ करते हैं, फिर रिटेल पार्टिसिपेशन वहाँ पे बढ़ता है, इन्वेस्टर्स आता है, फिर पंप इन होता है प्राइस, फिर जाके वो लोग निकल लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को लिक्विडिटी मिल जाता है, एग्ज़िट एग्ज़िट पॉइंट मिल जाता है। Right. तो आपको ये देखना है कि कौन-सा प्रोजेक्ट, और मतलब ये चीज़ है कि जल्दी-जल्दी में ना आप लोग इन्वेस्ट मत कीजिए। इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही पेशेंस का काम है। देख के, सोच के, R&D करके, सब कुछ डेटा एनालिसिस करके फिर जाके इन्वेस्ट करो। बस यही या मैंने ऐसा एवरीवन होता थिंक्स नहीं। लाइक एक अपॉर्चुनिटी, हम ये अपॉर्चुनिटी खो देंगे कभी नहीं मिलेगा। दिस इज द मेंटालिटी दैट ऐसा होता गोस ही राइट। नहीं, मार्केट मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत हमेशा फनी है। आएगा। मार्केट जब हम लोग पैदा हुए थे तब भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। कहीं भागे नहीं जा रहा है एग्जैक्टली। मार्केट। वही। Right. So I think with this we have come to an end of the show. So thank you everyone was part of the live session, and also whoever is watching this till now. Thank you everyone for being a part of us. And for next week, we'll also keep on doing such live sessions. We'll keep on calling Ritik and keep on bugging him to come on the show and share his insights. And with this, I think we'll wrap it up for this week. Thank you everyone for joining in, and do like, share, subscribe the A2Z crypto channel. And let's Yeah, meet next week again. also follow Film Finance, please. Yes. या And a प्लीज़, shout प्लीज़। out for Film Finance. Do follow Ritik, and do follow Film Finance also. He's Sign actually up. doing quite a good work. So our viewers should visit his website and see his products, basically what he is doing, what he is planning. Yeah, thank you so मूवी much. Yes. इंडस्ट्री से है, काफी कुछ चीज वो लाने वाले हैं मार्केट में, तो आप लोग जाके उसको देखो। आप लोगों का अगर कोई मतलब कमेंट वगैरह कुछ है तो भी वो आप लोग उनके साथ शेयर कर सकते हो, ताकि हम लोग एक्चुअली कम्युनिटी को बिल्ड करने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर उसका डेवलपमेंट के लिए वो भी चाहिए Right. कमेंट्स डिफरेंट यूजर्स के पास से, तो फिर वो भी आप लोग शेयर कर सकते हो ऋतिक के साथ। एंड थैंक्स ऋतिक फॉर ज्वाइनिंग विद अस। Absolutely, Yeah. it was my pleasure. And whenever you guys need me, I'm always there. You, it sounds like you know this, right? Sure, we'll keep on bugging you to come here again and again. So thank you guys for watching. Have a great weekend ahead. Thanks everyone. Bye bye. Yeah. थैंक्स, थैंक्स, Bye, थैंक्स। guys.